medial surface of the cerebrum. So on the medial surface of the cerebrum, this is known as a corpus callosum. So corpus callosum below to the third ventricle, let's say lateral ventricle, below to the corpus is the lateral ventricle, and this lateral ventricle is covered with the thin sheets known as the septum pellucidum, which separate the two lateral ventricle. जो दो lateral ventricle को separate करता है उसको बोलते हैं septum pellucidum, and posteriorly क्या होती है यहाँ पे fornis की attachment होती है. ये कौन सी यहाँ पे septum pellucidum. So this is the septum pellucidum. आप देखोगे superior to the corpus callosum parts, sorry. So this is the genu of the corpus callosum. This is the body of the corpus callosum. This is the splenium of the corpus callosum. So corpus has three parts. So anterosuperiorly of the corpus callosum, this is known as the callosal sulcus. So this is the callosal sulcus which separate the corpus callosum from the gyri. Okay. Now anterior to genu, there is a start of another sulcus. So this sulcus is known as a cingulate sulcus. So these cingulate sulcus posteriorly extend upward, posterior to the central sulcus up to the superomedial border. So this is known as a cingulate sulcus. So the area between the cingulate sulcus and callosal sulcus is known as a cingulate gyrus. And there is a small extension anterior to the posterior ramus. So this is a small extension which divide the posterior to this extension. This is known as a paracentral lobule. Along with the central sulcus, this is known as a paracentral lobule. जो आपको सिंगुलेट sulcus से एक अपवर्ड एक्सटेंशन दिखाई दे रहा है, वो क्या करती है यहाँ पे पैरासेंट्रल लोब्यूल्स को डिफरेंशिएट करती है. ठीक है, इस बीच में क्या प्रेजेंट है पैरासेंट्रल लोब्यूल. सो दिस द सेंट्रल sulcus. And anterior to this gyra is known as a middle frontal gyrus. So this is the middle frontal gyrus. Okay. हम पोस्टीरियरली देखते हैं यहाँ पे ये कौन सा है सिंगुलेट सल्कस के पोस्टीरियरली ये कौन सी एक लॉन्गिट्यूडिनल सल्कस दिखाई दे जिसका सुप्रास्प्लीनियल सल्कस. सुप्रास्प्लीनियल सल्कस जो डिफरेंशिएट करती है कौन सा यहाँ पे जो सिंगुलेट गाइरस है उसको प्रीक्यूनियस. दिस इज द प्रीक्यूनियस गाइरस. दिस इज द सिंगुलेट गाइरस. पीछे देखोगे यहाँ पे कौन सी है पेराइटो ऑक्सीपिटल सल्कस. निकलती कहां से है एक कैल्कराइन सल्कस है. सो दिस इज द कैल्कराइन सल्कस व्हिच रनिंग ओरिजेंटली टुवर्ड द ऑक्सीपिटल लोब ऑफ द मीडियल सरफेस. देखो यहाँ पे कौन सी कैल्कराइन सल्कस. ये निकलती कहां से है ये स्प्लेनियम के नीचे वाला पार्ट से. आप ये देखोगे स्प्लेनियम के नीचे से निकल रही है कौन सी यहाँ पे कैल्कराइन सल्कस जो हॉरिजॉन्टली बैकवर्ड्स रन कर रही है. तो कौन सी कैल्कराइन सल्कस. कैल्कराइन सल्कस की स्टेम से ही ये निकलती कौन सी पेराइटो ऑक्सीपिटल सल्कस. सो दिस इज द पेराइटो ऑक्सीपिटल सल्कस. तो कैल्कराइन सल्कस के बीच में और पेराइटो ऑक्सीपिटल सल्कस के बीच में ये ट्रायंगुलर एरिया जो देख रहे हैं उसको बोलते हैं हम लोग क्यूनियस. सो दिस इज द क्यूनियस एंड दिस इज द प्रीक्यूनियस. सो दिस इज एंड एंटेरली देखोगे जेनु के आगे देर इज अ पैराओल्फैक्टरी सल्कस. दिस अ पैराओल्फैक्टरी सल्कस है ना. ये पार टर्मिनल सल्कस होती है पैरा टर्मिनल सल्कस. दिस इज द पैराओल्फैक्टरी गाइरस. सो इट डिवाइड द टू गाइरस. दैट इज द पैरा टर्मिनल गाइरस एंड दिस इज द पैराओल्फैक्टरी गाइरस या पैराओल्फैक्टरी गाइरस. सो दिस इज द एंटीरियर द जीनू एंड द सल्कस लिमिटेंट्स के आगे देखोगे तो कौन सी है पैरा terminal gyrus and para-olfactory gyrus. Now the sulcus and gyrus on the inferior surface. So inferior surface is uneven. So this is the orbital part of the inferior surface. This is the tentorial part of the inferior surface. Orbital part में देखोगे and the medial side. This is the para-olfactory olfactory sulcus. So this is the olfactory sulcus. In the olfactory sulcus there is a olfactory bulbs and the tracts are present. So this is the olfactory sulcus. Medial to this olfactory sulcus, you can see this is gyrus is present known as a gyrus rectus. So this is the gyrus rectus and lateral part there is a H shape. So this is the H shape sulcus is present. So it divides the orbital part into the anterior, posterior, medial and lateral gyrus. So this is the H shape sulcus in the orbital part. Lateral to the para-olfactory sulcus या olfactory sulcus.
Now the sulcus present on the inferior surface of the temporal gyrus. So you can see in this. So inferior tentorial surface of the temporal lobe. तो यहाँ पे देखते हैं medial side. So on the medial side there is a collateral sulcus. So this is the collateral sulcus which is parallel to the calcarine sulcus. अगर यहाँ हटा दे इसको, ये कौन सी थी यहाँ पे calcarine sulcus, उसकी पैरेलली दिखाई दे कौन सा यहाँ पे collateral sulcus. So area between the calcarine sulcus and collateral sulcus, this is known as a lingual gyrus. So anterior part of the lingual gyrus is known as a hippocampal gyrus. So this is the hippocampal gyrus, and the hippocampal gyrus anteriorly it form a hook-like structure. So this hook-like structure known as the uncus. Okay, so this is the uncus, and this sulcus, a small sulcus known as the rhinal sulcus. Okay, the next sulcus is a lateral, you can say you can say perioccipital sulcus. Yeah, occipitotemporal sulcus. So this is the occipitotemporal sulcus which divide this inferior part of the temporal in the tentorial surface into the medial occipital temporal gyrus and the lateral occipital temporal gyrus. So this is the medial occipital temporal gyrus and this is the lateral occipital temporal gyrus. So this is all about the medial surface and inferior surface, that is gyrus and sulci present on the cerebrum. Thank you for watching.